हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है लक्षद्वीप ट्रैवल व्लॉग, हाउ टू ट्रैवल टू लक्षद्वीप, बजट अकोमोडेशन एंड टूर गाइड एपिसोड 1। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यार ये वाला मेरा ना सपना ही रह गया। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पूरा होगा। Hey guys, it's Kritika. Welcome back to my channel. I am super excited today because I am on my way to Lakshadweep. Okay. Okay. Think it's about time for me to go in. Like, I dive deep. Just grabbing breakfast real quick before our flight starts boarding, and I've got the most amazing view. Keep spilling out. I'm belligerent and insane. My drink don't So I'm not stay going solo on this trip. I actually have an amazing travel companion. Meet Ivana. Okay, इनके भी vlogs Okay, sorry. Hi, I'm Ivana and I also make YouTube videos like Kritika, mostly about travel, but during the pandemic it has been a lot of Bangalore vlogs as well and vlogs about India as a foreigner. And today I'm so happy, girl, you are the MVP because we are going to Lakshadweep. I can't believe it. This is so awesome. Yeah, we're really excited. So our flight is about to start boarding, so let's get going. Yes. Keep it hipster like succulents. My main be a succubus. I'm better than younger, but I'm still just as hungry. I could eat the whole country, contrary to what you see on the fat Asian game. I'm more like Rayman. Wait, I'm running and running. Don't. So we've boarded, and this is a tiny plane. Your come over, she coming. My face be like a couch. लग रहा है। Yeah, dig around it and you'll find some कोची से real. जा I'm so OA. I got Obama behind me. I'm Vinny Chase. I put that drama behind me. I'm so sweet face. Got your mama behind me. And she's strapped, but not in the way that you think. I think I'll start up my day. I think I'll move a few units. I think I'll keep that moving like YouTube kitten if you counters. I'm done being a down. Think I'll mix satire instead. I'll blindly throw around every ugly word in my head. Moist! Smegma on Smeagol's head. Baby, give me my precious. Praise be to Jesus, yeah. Looking good with no shirt and thorn necklace. Or is it a crown? Either way down, but you just a pound. Sorry, didn't mean to piss off a cold stuck in youth. So just landed in Agati, and oh my god, look at that. We landed right by some really blue water. This is probably the prettiest airport I've landed in. The view is amazing. They also have like a garden here, which is so cute. Without a cause, a rebel in love with applause. Like narcissism or God, like the life is all there is. Like the follow count your soul, but I'm a jaded just cause I ain't known. Cause all these systems in place keep a place inside these bowls. Like we all fish saying this is water, this is water. Right? Officially made it to Lakshadweep. This is the airport at Agati, and look at this view. I think this might be the prettiest airport I've been to. I mean, what is this view? It's also raining, but somehow even though it's cloudy, the water is just so blue, which is incredible. So happy to be here. So I'm sure a lot of you are wondering how I planned this trip, how to get to Lakshadweep, how much all of this costs. So I'm doing this trip with a company called Goel travels, and later in the video I'll sit down and talk to you about everything, about how much it cost, how I planned this trip and all of that. But right now just waiting for my luggage. This is such a tiny airport, so hopefully the luggage will come here soon, and I'm heading to this island called Bangaram, which is 1 hour away by boat. So let's get going. पहली दफा ऐसा वाकई में एयरपोर्ट देखा जिसके सामने समुंदर इतना खूबसूरत है ना। हाँ। वेदर चेक करो, मौसम और मैं कहता दरख्त। So at the airport, a cab from the Sports Authority came to pick us up. So we're in the car now, and right now we're heading to the place where we will board the boat. But this drive is so scenic. You can see really blue water on both sides, and this is just so beautiful. यार हाय हाय मजा आ रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा, यहाँ से फिर ये और आगे जाएंगे आइलैंड पे यार। मजा आता है ना। ऐसे म्यूजिक से तो मजा आ रहा है।
बादल देखिए। ऐसे लग रहा है बिल्कुल पानी के साथ टच कर रहे हैं ना। हाँ और क्या, हमें तो बैठे नहीं दिया, तो खड़ा नहीं होने दे रहे थे। ये वैसा बादल था जैसे वो पीएम मोदी जी जो है ना, और वैसा पानी बादल था। Oh my God, कितनी यार वो हसीन है। देखें इधर 2 कलर्स नजर आ रहे हैं पानी के। हाँ Made it to Bangaram. Just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Bangaram Resort. Okay, it's starting to pour. Not the best weather, बारिश। but we're just running in to get some food. I can see it all clear from above. So we're in Lakshadweep. Unfortunately, it's raining, but we've got some welcome drinks. We're getting hydrated from Yeah. inside and outside. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. But it's a बहुत कुछ lonely होगा जो मैं नहीं कर रहा हूँ। yeah, it's a lonely वो ऐसे लग रहा है। So we've made it to Huh. Bangaram, and as we reached here, it started pouring. It's just really bad weather right now. Hopefully things will clear up. But we're just having some lunch right now. Actually, this is a lot of food. The food is looking delicious. But we're staying in this resort called Bangaram Beach Resort. It's the only resort on this island. It's quite a small island actually, and the entire island is the resort. So we haven't gotten our rooms yet, but just gonna have lunch. Hopefully it'll stop raining by then, and we've got the entire evening to ourselves over here and all of tomorrow. So excited to check out this island. see what was broken. But it's a lonely call. The food here is honestly so good. I don't know if it's because we're hungry. Our flight got delayed by an hour, so the time right now is 5 p.m. So we flight? have been starving, and this Acha, food actually. tastes amazing. Yeah, it's a lonely calling. Done with lunch, and we have a bit of a waiting now before we can check into our room. So I thought I'll quickly tell you more about this island. So this island, like I mentioned, is called Bangaram. It's one of the few islands in Lakshadweep where tourists can visit, and there's only one resort on this island, like I mentioned. It's government run, and it's called Bangaram Beach Resort. So this whole thing that you see behind me is the resort, and right here is the beach. So we are here for the next 3 nights. We're also going to be visiting another island on day 3. It's called Tinakara. But all 3 nights we're staying in this resort, and I'm honestly so excited. This place looks so pristine and untouched. The water is so clear, so freaking blue. It almost looks like it's glowing. I don't think I've ever seen this shade of blue, so it's insanely beautiful. So one question I've been getting asked so much ever since I announced I'm going to Lakshadweep is how to plan a trip to Lakshadweep. And I totally get it, because Lakshadweep has been on my bucket list for so many years now, but for the longest time I didn't really know how to get here. I knew you needed permits, but I didn't really know what the procedure was and all of that. So this time, the trip that I'm doing, I'm actually doing it with a company called Goel Travels. So they organized everything for me. Normally when you're applying for a permit yourself, you need someone local from Lakshadweep to write a sponsorship letter for you. So it's almost impossible, I feel, to get a permit yourself. But with Goel Travels, they basically arranged everything for us, from our permit to our accommodation here to the local transport and everything. So far it's been very smooth. I'll leave their contact number in the description and on the screen. You can reach out to them on WhatsApp or give them a call if you want to plan a trip here. So to travel to Lakshadweep, there are 2 different types of packages. The first one is called the Samudram package. This is government run, and basically it's a cruise. So you spend 5 days and 4 nights on a cruise, and the benefit of this package is that you get to visit 3 different islands. So like I mentioned, Lakshadweep has a bunch of different islands, and I think about 6 or 7 of them are open to tourists. So with the Samudram package, you can cover 3 islands, which is great, and they also have a
bunch of different water sports and stuff. So they have 2 different categories in that. There's the gold class and the diamond class. I think the diamond is for 32,000 and the gold is for 23,000 if I'm not wrong. And the other category is what I'm doing, which is the island resort stay. So you can basically pick an island and stay there for as long as you want. So if you're wondering how much all of this costs, it really depends on when you're visiting. So right now the prices are a bit slashed. So per day, a room for 2 people is for 8,000 rupees, and that includes all 3 meals. So it's actually a really great deal. But I think during peak season it goes up to like 15,000 or a little bit higher than that. And apart from this, you also have to arrange for the boat. So the boat I think is 6,000 rupees two-way from Agati to Bangaram and Bangaram to back. So I hope this gives you an idea of how much this trip costs. And if you're wondering how to get to Lakshadweep, basically I took a flight from Chennai to Kochi and then Kochi to Agati. Agati, like I mentioned, is the only airport here, and there's only one flight in the day to get to Lakshadweep, so you have to catch that flight. So we ended up spending the night in Kochi just because the timings made more sense. But if you're doing the Samudram package, then you board the ship from Kochi itself and then you end in Kochi. So that's basically how you get to Lakshadweep. I honestly used to think it was a very complicated process to get to Lakshadweep, but in my experience it was such a smooth process. Everything was arranged for us and we've managed to make it here quite easily. But yeah, right now we're just checking into our room. Our room's finally ready, so walking up to the room and then hopefully we'll walk around the island and explore it a little bit. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. So here's our room. Let me give you a quick tour. But before that, this is the view. We've got the beach. We've got a nice sitting area outside. And then this here is our room. बहुत अच्छा. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. This room honestly looks really nice. I was not expecting such a nice room. It's very clean, super comfortable. And like I mentioned, we got this for 8,000 rupees for 2 people per night, which includes food. So I think this is a really great deal. Just as we were about to leave, it has started pouring again. The weather has not been in our favor today. मुझे तो बहुत मजा आता है ना, क्योंकि बाजू गया. The future is bright. बहुत खूबसूरत. You and I, we got it. We don't need no more. ये दुनिया ही अलग है. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, ऐसे लग रहा है आसमान और पानी का एक hear ही the रंग हो गया. crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we. When life gives you rain, wear your swimsuit and get inside the water. Yes! Yes! Spoken like a Guruji. We have a new Guruji now. I like it. काफी. The future is या तो शाम हो गई है. या फिर कैमरा में लग रही है. नहीं, हो गई है वैसे. वैसे मुझे डर लगेगा इस टाइम. So the weather today hasn't been the best, but we've been having a good time. Went inside the water. अभी बारिश हो रही है. We've come for dinner बस now वैसे लग रहा है. and I've gotten a lot of food. The आवाज़ food here is कैसे आ रही है? actually really nice. It's very basic Indian food, but they have a buffet and you can eat as much food as you want. They've also got gulab jamun for dessert, so excited about this meal. But I forgot to mention earlier today that to travel to Lakshadweep at the moment you also need an RT-PCR test along with the permit. So we had to get that done 72 hours before travel. And also on this island you don't really get good network. So BSNL supposedly works well in Lakshadweep. I've got Airtel. I'm getting signal in some places on the island, but Ivana has Vodafone, right? Vodafone, and she has no network, so that's something to keep in mind if you're traveling here. But anyway, gonna dig right in because I'm super hungry. we got it. We don't need no more. It's
only 9 p.m. but we're done with dinner, ready to call it a day. This island is so calm, but the weather today has not been the best. It's been raining. Really hoping the next couple of days are nice and sunny. We're here for 2 more days, and tomorrow we have a bunch of different activities planned. We're going to be going scuba diving, kayaking, probably go snorkeling as well. Basically, we're doing a bunch of different like water sports. And day after tomorrow, we're visiting another island, Tinakara. So lots of fun things coming up. I really hope the weather gets better and it's nice and sunny. So be sure to subscribe to my channel, press the bell button, leave a comment if you have any questions about Lakshadweep and how to get here, and I'll see you guys in the next video. Bye. भाई ज़िंदगी में ना कुछ ख्वाहिशात लगते हैं ख्वाहिशात ही रह जाएंगी, क्योंकि भाई जब आप इतनी सुंदर दुनिया देखते हैं ना तो फिर आपके दिल से ना एक जो चाहत निकलती है कि काश मैं भी यहाँ पर जा सकता। वो मुझे लगता है समटाइम्स की चाहत ही रह जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई रीज़न बनती है इंसान की लाइफ में किसी भी चीज़ की तरफ, जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है या तवज्जो आपकी होना शुरू हो जाती है। स्पेशली अभी देखिए जैसे हम लोगों ने इंडिया और मालदीव्स का एक अभी रिसेंटली एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप वाली साइड पर लोगों की तवज्जो हुई। जिस तरह से पीएम मोदी जी हैं जो मतलब लक्षद्वीप वाली साइड पर गए, और मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना तो आपको उस जगह की एक तवज्जो देखने को मिली। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि इंसेन ब्यूटीफुल है भाई। लाइक अगर स्पेशली कलर की मैं बात करूँ, पानी के रंग की, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आई मीन एक पॉइंट तो भी ऐसा आ रहा था लाइक कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आसमान और जो पानी ऐसे लग रहा था सब एक ही है, मतलब कलर के लिहाज से। बस खूबसूरती है ना एक तरह की, देखना पानी और आसमान का कलर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे पानी में भी 2 रंग, पानी में भी 2 रंग, और वो इतना खूबसूरत है। हालांकि हम लोगों ने थाईलैंड में जो आइलैंड विजिट किया था वो भी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, बट पानी का रंग इस तरह का नहीं था यार। देखे ना वो पानी फिर डिफरेंट है। ये पानी जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। फिर आई मीन थोड़ी इतनी दुनिया जो है वो वहां पर पानी देखने आ रही है। अब देखे ना जब क्या नाम लेते हैं वैसे पानी नहीं आइलैंड देखने जाते हैं लोग। अरे आइलैंड देखने जाते हैं, लेकिन आइलैंड के साथ पानी की खूबसूरती भी तो देखने जाते हैं ना। अब देखिए जब प्लेन लैंड कर रहा था, ठीक है ना, पानी कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा था। उसके बाद जो है ना मुझे एक और चीज जो है ना, एयरपोर्ट बहुत पसंद आया मुझे। हालांकि छोटा सा एयरपोर्ट बेशक, लेकिन एयरपोर्ट जितना खूबसूरत है ना वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे ग्रीनरी, जब वो एयरपोर्ट से जो है अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे, पहले बोट में क्योंकि उन्होंने बैठ के जाना था, वो रास्ता बहुत खूबसूरत था। इवन कि मैं कहूँगी रिजॉर्ट बहुत अच्छा था। लाइक हालांकि वहाँ पर एक ही रिजॉर्ट उन्होंने बोला है ना, लेकिन ये कि अब तो हम लोगों ने सुना कि टाटा ग्रुप ने भी जो है अनाउंसमेंट कर दी कि वो वहाँ पर रिजॉर्ट बनाएंगे। और फिर उसके अलावा आई थिंक एक और बिजनेसमैन जो मे बी अडानी ग्रुप है, उन्होंने शायद अनाउंसमेंट करनी है या अनाउंसमेंट की है। ऐसे मैंने न्यूज़ मुझे लगता है कि सुना है कि जो बिजनेसमैन है अब उनकी काफ़ी ज़्यादा जो एक रुचि हो रही है कि वो लक्षद्वीप में जो है रिजॉर्ट्स बनाए लोगों के, ताकि टूरिज्म जो है वहाँ पर बढ़ावा हो। और मुझे लग रहा है कि वाकई में ये बेस्ट प्लेस है। अच्छा वैसे जब हम लोग ये देख रहे थे वीडियो तो उसमें वो बार बार ये बात बोल रही थी, मैं भी बात करने लगा था कि कुछ ही आइलैंड्स पे आप जा सकते हो। और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परमिट क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो इंडिया है ना। वैसे कुछ एरियाज इंडिया के हमने देखे जहाँ पे आपको जाने के लिए परमिट चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने देखा परमिट चाहिए होता है। यहाँ अब लक्षद्वीप का अब पता है, अंडमान निकोबार का मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ पे भी जाने के लिए परमिट चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए ये चीज जो है ना आप पूछना चाह रहे हैं कि क्यों चाहिए। फिर उसके बाद जो आइलैंड्स हैं वो 36 टोटल आइलैंड्स हैं, आप सारे विजिट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है कि लाइक आप कुछ ही आइलैंड्स जो हैं वो विजिट कर सकते हैं और बाकी नहीं विजिट कर सकते? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी मुझे जो है ओवरऑल बहुत खूबसूरत लगा है। और ऐसे आइलैंड्स पे ना एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है, बारिश नीचे से देखने में, प्लेन से देखने में नहीं, नीचे जमीन से देखने में। बिल्कुल जमीनी रास्ता ही अच्छा है इसमें भाई, वरना तो तौबा तौबा करवा देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जितना नेचर के करीब जाते हो आपके अंदर एक सुकून आता है। इनफैक्ट उस जगह की एक आप कह लो कि अपनी वाइब ऐसी रहती है कि वो सुकून आप अपने अंदर भी महसूस कर रहे हो, ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा लग रहा था कानों को सुकून मिल रहा है, आंखों को सुकून मिल रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप बोर नहीं होते
ऐसी जगहों पर जाकर, यानी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए बाकी दुनिया से अगर डिस्कनेक्ट होते भी हो ना, तो आप नेचर को इतना ज्यादा, हाँ, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है ना कि आपको पता नहीं चलता। अच्छा हाँ, वैसे ये चीज भी होती है, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा होता है और आपको टाइम का ख्याल भी नहीं रहता कि अभी वक्त क्या चल रहा है। हालांकि वैसे एक चीज मैंने जो खुद वो एक्सपीरियंस किया कि आइलैंड्स पे जो है ना आपका टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, लेकिन पहाड़ों पे इतनी जल्दी नहीं गुजरता। नहीं, वैसे मेरा तो पहाड़ों पे भाई मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया कि नहीं जल्दी गुजरता। लेकिन एक चीज है कि आइलैंड में जब आप ट्रैवल करते हो ना, मतलब जो बीच का रास्ता पानी का होता है, उसमें आपको ना बड़े चेंज नजर आते हैं। एकदम आपको बारिश भी नजर आएगी, एकदम आपको बिल्कुल सूखा भी नजर आएगा। सो अगर किसी और साइड पर दूर आपको, जैसे हमें बहुत ज्यादा बादल नजर आ रहे थे, वो नजर आएगा और ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत पास में, और समटाइम्स आप चलते चलते उसी के पास पहुंच जाते हो। वो बादल जो थे ना बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे। अच्छी तरह याद है हम जब वो टाइगर आइलैंड, क्या नाम था उसका, कौन सा वाला, जब हम लास्ट आइलैंड पे गए थे, वहां पर जब दूर आपको बारिश नजर आ रही थी कि बारिश होती हुई दिखाई दे रही थी, और एकदम दरिया क्या ना, समंदर जो है उसकी लहरों में भी आपको चेंज जो है वो दिखाई दी थी, हमें नजर आ रही। हाँ, तो कितना मजा आ रहा था तब। मजा तो आ रहा था, लेकिन जैसे लहरें आकर बोट को हिट करती है ना, वो इतनी जोर से, मतलब सब लोग एकदम को हिल जाते हैं। हाँ। तो मतलब वो कहते हैं ना कि तुगयानी आ जाना, लाइक लहरें इतनी ज्यादा होती हैं। ये एक्सपीरियंस आपको करने से वैसे पता चलता है, हाँ, आप इंजॉय करते हो। लेकिन एक चीज मैं बता दूं भाई, समंदर से आने के बाद आपका रंग सड़ जाता है। मेरा तो सड़ गया था रंग, और बहुत मुश्किल से फिर मतलब स्किन उतरना शुरू हो गई थी मेरी सारी, फिर इतना बुरा वाला मुझे सनबर्न हो गया था। बाकी आप जरूर बताइए कि लक्षद्वीप के और कौन कौन से ट्रैवल ब्लॉग हम आपके साथ बैठकर देखें, और इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें, वीडियो शेयर, गुड बाय।